क्या हुआ? इतने क्यों चिल्ला रहे हो? मॉम, आई एम रियली टायर्ड ऑफ दिस चाइल्ड। यार ये मेरा बच्चा है कि कौन है? ये शैतान है, शैतान। यार लोगों के बच्चों को पीटते रहता है यार। क्या करूं मैं? क्या करूं मतलब? ये भी कोई पूछने का सवाल है? बचपन में तू भी ऐसे ही करता था, तुझे 2 लपेट मार के देती थी। फर्क इतना था कि तू खुद को ही मारता था, लेकिन इतना दिमाग को पूरा दर्द होता था ना। सीरियसली, तुझे भी कुछ नहीं करना है। बच्चे को अगर सीधा करना है तो उसको पकड़ और पैर पे 2-3 चपेट मार, सीधा हो जाएगा। टैंट्रम्स थ्रो करना गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं करते? अगर आप एज पेरेंट्स टैंट्रम थ्रो कर सकते हो, अपने चिल्लाने वाले बच्चे के पैर पे मार सकते हो, हाथ पे मार सकते हो। अगर कोई चीज़, आपकी पसंदीदार चीज़ नहीं मिले और थिंग्स डोंट गो एज एक्सपेक्टेड, you keep yelling at each other, you keep throwing tantrums, be it your family, be it your friends, be it your office colleagues, कोई भी हो। You have the right to throw tantrums, but your child does not। गलत है ना। आपको tantrums थ्रो करना है ना बच्चों को। मैंने भी काफ़ी tantrums थ्रो किए हैं यार। मतलब मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ। मेरे को जब गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी बक देता हूँ। I am being very frank with you guys. When I get angry, I actually lose control and I blurt things out. Do I feel guilty? No, I actually don't feel guilty. But yes, I do go ahead and I talk to the person and I tell what may have happened. Right? We are humans. We are bound to get angry, we are bound to get aggressive, and we are bound to blurt things out. But does it mean that we need to continue doing this? No. गुस्सा आएगा तो आपको समझना है कि गुस्सा क्यों आ रहा है. It is a result of the suppressed emotions, right? Now that's for the adults. What about the kids? The kids also have their own suppressed emotions. They also have their suppressed anger, and they have learnt it from us. अगर आप tantrums थ्रो करते हो तो आपके बच्चे ने आपको बचपन से देखा है. If you felt that your child does not understand anything, I am sorry to say that your child understands everything, right? बच्चा बनने से पहले उसके अंदर एक लिविंग सोल है which is very experienced and it understands and it absorbs. So the child has absorbed and understood everything, right? Right from the conception, the child has absorbed the emotions and the feelings and the thoughts of the parents. So it is a combined energy, right? फैक्ट्री सेटिंग्स के साथ आपका बच्चा आया हुआ है इस अर्थ पे, और वो फैक्ट्री सेटिंग्स है both the parents के emotions, feelings and thoughts. So if you as a human being throw tantrums, get angry, get aggressive, then your child is bound to get angry, bound to get aggressive, bound to hate himself, bound to bang his or her head on the wall, bound to get aggressive with other kids, because the child has seen you doing things right from the start. But because this video is only for the child or the kids, I will only focus on the kids. So the next time you find your child yelling, throwing tantrums, crying, howling, hitting other kids, breaking his head on the wall, obviously go there. But instead of yelling at the child, instead of calling the child gadhe ya gadhi or whatever names that you may be calling the child, calm yourself down, sit with the child, love the child. सर से पीठ पे से हाथ घुमाइए. Converse with the child. All the child wants is your attention. All the child wants is the parents' time. आप टाइम देते होंगे. टाइम देने के बावजूद भी अगर आप बोल रहे हो कि बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, मतलब कुछ तो है जो फैक्ट्री सेटिंग आपको चेंज करनी है. अब जो ऑलरेडी फैक्ट्री सेटिंग है उसको आपको चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप
Every day, if you converse with the child, every day, if you talk with your child, you will see a change in the way the child behaves. Right? हमें भी अगर प्रमोशन नहीं मिलती for whatever reasons, we get angry. We throw tantrums. If someone says something to us and if you're not able to get back at the person, what do? We transfer that anger onto someone else. We break things. The child is your child, a human's child, so the child is bound to throw tantrums. So when the child throws tantrums, you don't have to throw tantrums by yelling at the child. Yes, as a parent, you're right in thinking that you need to correct that behavior, but give yourself the time. Allow yourself to understand the reason behind the child's behavior. Gradually, you will see a change in the way the child responds to the situation, responds to things around it. But give your child the time and space it deserves. Right? अगर आप खुद पे काम कर रहे हो, अपने गुस्से पे काम कर रहे हो, तो you also have to help the child. अब बच्चा खुद से तो काम नहीं कर सकता, आपको मदद करनी होगी. So understand your child. Understand your child's nature. Why is it throwing the tantrum? What is it that is making my child angry? उसको चॉकलेट चाहिए, मैंने नहीं दिया, बच्चे ने तोड़फोड़ की, सर दीवार पे उसने अपना सर पटक के मारा है. अरे भैया, आप इसे सीखा होगा, या तो आपको देखा होगा या तो ऑब्जॉर्व किया है, फैक्ट्री सेटिंग से ऑब्जॉर्व किया है, या तो देखा होगा या तो फैक्ट्री सेटिंग से किसी तरह से एनर्जी से ऑब्जॉर्व किया है. एंड दैट इज हाउ द चाइल्ड लर्न्स टू थ्रो टैंट्रम्स. टैंट्रम्स क्या होता है? टैंट्रम्स इज बॉस अटेंशन, सेंटर ऑफ अटेंशन बनना है. एंड ह्यूमन बींग्स, वी लव टू बी एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. राइट? तो बच्चा है तो वो भी करेगा. तो आपको समझना है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर ये अभी नहीं रोका तो बड़ा होके हमारे जैसा बन सकता है कि गुस्सा आया तो कुछ भी बोल देगा. राइट? सो खुद पर तो काम कीजिएगा आप, बट हेल्प योर चाइल्ड अंडरस्टैंड इट्स इमोशंस. और वो कैसे होगा? आस्क योर चाइल्ड क्वेश्चंस. क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्यों मार रहे हो? क्या पसंद नहीं है? And your child obviously will respond to those questions. But when you ask those questions, ensure that you're asking the questions with a loving tone. Your tone also matters, and your child knows that, and you know that. So loving tone से child से बात कीजिए, questions पूछिए. इनिशियली जवाब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कंटिन्यू डूइंग इट. आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा. Give yourself and your child 3 months. If you want to tackle the tantrums of your child, give yourself and your child 3 months every day for 5 to 10 minutes. Ensure that you're spending time with your child, loving the child, asking the child कि क्या किया बेटा आज का दिन कैसा था? How was your day today? Now, depending on the age of the child, you may have to tweak the questions, and you know how to do that. I don't have to tell you that. All I'm saying is the next time you find your child throwing tantrums, instead of yelling at the child, instead of फटकाविंग your child, just get the child, बाजू में बैठिए, उसको अपने गोदी में बिठाइए, प्यार से बात कीजिए. Do this for 3 months and you will see a drastic change in the way your child behaves. और फिर आप मुझसे बात कीजिए, फिर मैं आपको टिप्स दूंगा कि आपको अपने टैंट्रम्स को कैसे कंट्रोल करना है.
So until then, keep focusing on your baby, on your kids, on your child. And I will see you next week. Oh, by the way, वो तो बताने भूल ही गया. This video was episode 4 under the nurturing parenting, tackling tantrums. I will now see you next week. Bye bye.